Hello everyone. Now in a structural analysis 1, today we are going to see our next topic, degree of kinematic indeterminacy or degree of freedom. So before we going to see our next topic, in a previous video we saw that plane frame and grid frame. So what is of degree of redundancy of a grid? So first of all, a grid is a plane structure composed of a continuous member that either intersect or cross each other. Grid क्या है? Grid is one of the plane structure. Grid एक plane structure है. किससे compose होगा? Continuous member. There are different type of continuous member that either intersect or cross each other. ठीक है, एक दूसरे से कंपोज होगा और इंटरसेक्ट होगा ईच अदर, एक दूसरे के साथ. सो इट इज़ द ग्रिड. सो ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रिड जनरली लाई इन अ वन प्लेन. ठीक है, जो ग्रिड के अंदर जो ऑल मेंबर होगा वो जनरली किस पे लाई होगा? इन अ वन प्लेन. एक्सटर्नल लोड एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ग्रिड. जो एक्सटर्नल लोड ग्रिड पे जो एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा वो नॉर्मल किस पे होगा? प्लेन ऑफ द ग्रिड. एंड कपल हैव देयर वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ग्रिड. ठीक है, सो द मेंबर ऑफ अ ग्रिड आर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल शियर फोर्स. ग्रिड मेंबर होगा उस पर शियर फोर्स कैसे एक्ट होगा? इट इज़ वर्टिकल. सो बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और जो ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होगी वो क्रॉस सेक्शन पे एक्ट रहेगी. सो एज द एक्सटर्नल लोड एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ग्रिड, देर इज़ नो एक्सल फोर्स इन द ग्रिड मेंबर. ठीक है, एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा वो कैसे एक्ट होगा? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ग्रिड. एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ग्रिड. सो देर इज़ नो एक्सल फोर्स इन द ग्रिड मेंबर. एक्सल फोर्स एक्ट नहीं होगा. So it is the degree of redundancy of a grid. Then after we saw plane, frame and grid. So plane frame is also known as rigid jointed frame. ठीक है, plane frame को हम क्या बोलेंगे? rigid jointed frame. So a plane frame is a composed of member lying in a one plane having axis of symmetry in that plane. ठीक है, प्लेन फ्रेम क्या है? कंपोज ऑफ मेंबर लाइंग इन अ वन प्लेन. ठीक है, हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दैट प्लेन. सो इन अ ग्रिड इट इज़ अ प्लेन स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ continuous member that either intersect or across each other. All member of rigid generally lie in a one plane. It is called grid. So here difference between plane frame and grid. Now next is the joint between the member are rigid. ठीक है, प्लेन फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम. ठीक है, प्लेन फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? रिजिड जॉइंटेड फ्रेम. सो द जॉइंट बिटवीन द मेंबर आर रिजिड. ठीक है, तो जॉइंट होगा मेंबर के बिटवीन जो जॉइंट होगा वो रिजिड रहेगा. ग्रिड, द जॉइंट बिटवीन द मेंबर में भी हिंज और रिजिड. ठीक है, ग्रिड के अंदर जो जॉइंट होगा मेंबर के बीच में वो कैसा रहेगा? हिंज और रिजिड. In a plane frame, the applied force are lying in the plane of the structure. All external couple acting on the frame have their moment vector normal to the plane. And the grid, the applied force are normal to the plane of the structure and couple have their vector in the plane of the grid. In a plane frame, the external stress results acting at any cross section of the plane frame member may consider of shear force, bending moment and axial force. And vice versa, in a grid, the external stress resultant acting at any cross section of the grid member may consist of a vertical shear force, bending moment and twisting moment. There is no axial force. ठीक है, in a plane frame
degree of freedom for displacement at each joint of a plane frame are 2 translation and 1 rotation. क्या होगा प्लेन फ्रेम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ईच पॉइंट पे प्लेन फ्रेम के अंदर वो कैसे होगी 2 ट्रांसलेशन एंड 1 रोटेशन. In a grid, degree of freedom for a displacement at each joint of rigid are 2 rotation and 1 translation. So in a grid member, degree of freedom for displacement वो कैसा रहेगा जॉइंट पे 2 rotation and 1 translation. Plane frame significant deformation are axial and flexural, where in a grid significant deformation are torsional and flexural. Then after we show some example degree of static indeterminacy for a given, so equation is for that ds equal to dm plus r minus 3j. Then after we show degree of redundancy of a space truss. So in the case of a space truss, all the member of the truss do not lie in a one plane. Very often space truss is formed by combining a series of plane trusses. The member of the space truss are subject to axial force only. The equilibrium of entire space truss or a section of a space truss is described by the 6 scalar equation given by summation fx equal to 0, summation fy equal to 0, summation fz equal to 0, summation of mx equal to 0, summation my equal to 0, summation mz equal to 0, where r equal to 6. So for a pin jointed space truss, if m plus r equal to twice j, it is stable, statically determinate. M plus r is less than 3j, it is unstable. M plus r greater than 3j, stable, statically indeterminate. For a space truss r equal to 6, so where r equal to number of condition equation available, ds equal to m plus r minus twice j. So at each support of a space truss, 3 reaction component are available. Now next is degree of kinematic indeterminacy or a degree of freedom. Degree of kinematic indeterminacy or degree of freedom, most important theory for exam base. So if the displacement component of the joint of a structure cannot be determined by compactibility equation alone, structure is said to be kinematic indeterminate structure. चलो अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किससे बोलेंगे. सो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होगा जॉइंट के पास, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन अलोन. कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर नहीं सकते उस स्ट्रक्चर को हम structure. So the number of additional equation necessary for determination of all the independent displacement component known as the degree of kinematic indeterminacy or the degree of freedom of the structure. So the number of additional equation, ठीक है, compactibility equation से only हम डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो एट दैट टाइम हम नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन की नेसेसरी रहेगी, उसकी ज़रूरियत पड़ेगी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट. सो इट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम. So thus the degree of kinematic indeterminacy is equal to the total number of possible displacement in the structure. So it is degree of now next is सपोर्ट. ठीक है, आप लोगों को पता है
In a structure there are different type of support. So first is a hinge or a pin support. So in a hinge support, vertical reaction will prevent vertical displacement, horizontal reaction will prevent horizontal displacement. Only rotation is permitted at a hinge support. ठीक है, hinge support होगा. So in a hinge support, vertical reaction will be prevent vertical displacement and horizontal reaction will prevent horizontal displacement. ठीक है, it is in hinge or pin support. Only rotation is permitted at a hinge support. Next, roller support. Roller is provided, so there are vertical reaction will prevent vertical displacement, rotation and horizontal displacement are permitted. किसके लिए है? Possible displacement at various support. Fixed support, so there are three reaction are there: horizontal, vertical and moment. So vertical reaction will prevent vertical displacement, horizontal reaction will prevent horizontal displacement, moment will prevent rotation and no displacement are possible at fixed support. ठीक है, सो हिंज सपोर्ट में क्या रहेगा? पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल प्रिवेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन विल प्रिवेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड ओनली रोटेशन इज परमिटेड इन हिंज सपोर्ट. ठीक है, हिंज सपोर्ट में हम रोटेशन को हम परमिट करेंगे. देन रोलर सपोर्ट, so vertical reaction will prevent vertical displacement, rotation and horizontal displacement are permitted. Fixed support, so vertical reaction will prevent vertical displacement, horizontal reaction will prevent horizontal displacement, moment will prevent rotation and no displacement are possible at fixed support. Now here degree of freedom per joint. So first is a plane truss, plane frame, space truss and space frame. So degree of freedom per joint, so in a plane truss it is 2 number delta x delta y, plane truss 3 number delta y delta x and rotation, space truss 3 number delta x delta y delta z and a space frame 6 number delta x delta y delta z, theta x theta y and theta z. So now for a pin jointed plane truss, at each joint two displacement are possible, delta x and delta y. So dk can be find out by dk is equal to twice j minus e, so where twice j equal to total displacement of all joint, e equal to number of equation of compactability. So the number of equation of compactability is equal to the number of constraint imposed by the support condition. As a each independent external reaction component provide a constant again linear moment, the number of equations of compactability is equal to the number of independent external reaction support, E equal to R. So R equal to number of external reaction component. So dk can be find out by dk is equal to twice j minus R. For a rigid jointed plane frame, at each joint three displacement delta x delta y theta z are possible, so dk equal to twice j minus R. For a pin jointed space truss, at each joint three displacement are possible, dk is equal to twice j minus R. Now for a rigid jointed space frame, at each joint 6 displacement are possible, delta x delta y delta z theta x theta y and theta z are possible, so dk equal to 6j minus R. So different type joint have a different support reaction and their degree of freedom per joint. It is denoted by dk. So equation for SI and KI, so different type of structure like a beam, plane truss, plane frame with an internal hinge and a grid have a different static indeterminacy and kinematic indeterminacy. So most important theory and very easy, so याद रखो. ठीक है,
So it is our most important chapter and most important theory. Different type structure have different static indeterminacy and kinematic indeterminacy.